Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the notification bell and don't forget to like. Thanks once again. आज मैं आपके लिए लाया हूँ Infused Squid in Turmeric sauce. It's an Oriental dish. So viewers, let's start. ये हाफ के जी squids है. Now I'll show you slowly how to clean the squid. इसको अच्छे से इसके जो स्किन है उसको निकाल के उसको स्क्रैप आउट करना है नाइफ से. उसके ट्यूब को और उसके टेंटिकल्स को भी निकालना है. अच्छे से इसको नाइफ से क्रिस्प हैश मार्क लगा के उसको रख देना है. अब इसको वॉश द स्क्विड इन 2 to 3 वाटर्स. इसको अच्छे से आप धो लेना 2 से 3 पानी में. और इसके साथ हमको वेजिटेबल्स में चाहिए चॉप ऑनियंस, कैरेट, ग्रीन बेल पेपर्स एंड चॉप ग्रीन चिली. अब हम स्क्विड को जिंजर गार्लिक पेस्ट, रॉक सॉल्ट और टर्मरिक, इसमें हम उसको फर्स्ट मैरिनेशन करके हम थोड़ा फ्रिज में रख देंगे. मैरिनेट इट नाइसली एंड लीव फॉर 15 minutes in फ्रिज. अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे. और उसको हम डीप फ्राई करेंगे until they are crisp. ये जनरली बहुत डेलिकेट है, थोड़ा वी हैव टू टेक लिटिल एक्स्ट्रा केयर फॉर स्क्विड. ये राउंड हो जाएगा. योर स्क्विड, crispy squids are ready. Now we can start with the infused turmeric sauce. In oil, एक पैन में ऑयल ले लीजिए. चॉप ऑनियन डाल देंगे, ग्रीन चिली भी डाल देना, कैरेट्स, बेल पेपर्स. इन सब चीज़ों को आप अच्छे से सौते कर लीजिए. ऐड वाटर और अ वेजिटेबल स्टॉक. इसको हम अच्छे से बॉईल आने देंगे. अब इसमें थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे. ऐड रॉक सॉल्ट, ऐड अ डैश ऑफ विनेगर, क्रश पेपर, when the water is enough boiling, add slurry of cornstarch to make the gravy thick. Your infused turmeric sauce is ready. Add the fried squid to it. We have to add दोनों ट्यूब एंड हेड बोथ ऐड कर देना. Add chopped coriander leaves and it is ready to serve.
So we can start with the wonderful plating with Chef Tanzil. Please leave your comments in my comment box.